Class 10th, surface area and its volume. Chapter 13, exercise 13.3 का question number 5. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height is 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter is 6 centimeter, having a hemisphere on the top. Find the number of such cones such can be filled with the ice cream. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन है इसमें एक कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर कंटेनर है जो कि आइसक्रीम से फिल्ड है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम है. आइसक्रीम इज़ फिल्ड इनटू ए कॉन्स और इन आइसक्रीमों को कॉन्स में हमको भरना है जिसकी कॉन की हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर उसका 6 सेंटीमीटर है, हैविंग ए हेमिस्फीयर ऑन द टॉप और कॉन के ऊपर एक हेमिस्फीयर भी सरमाउंटेड है. फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स और नंबर ऑफ कॉन्स हमें फाइंड करने कितने कॉन्स में आइसक्रीम भरी जाएगी कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. सो हम इसे सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हमारे को सिलेंड्रिकल शेप में आइसक्रीम फील्ड दे रखा है. सो वी मेक द सिलेंडर. दिस इज सिलेंड्रिकल shape which height is 15 centimeter and diameter is 12 centimeter. और इसको एक कोन आइसक्रीम में डालना है, कोन वाली आइसक्रीम में फिल करना है जिसका 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है. कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameter is 12 centimeter and height is 15 full of ice cream. The ice cream is filled into cones height 12 centimeter and diameter is 6 centimeter. Diameter is 6 centimeter. Having hemispherical shape on top. टॉप पर एक हेमिस्फेरिकल शेप है. हेमिस्फेरिकल शेप फाइंड द सच कोन्स. सो हमने क्वेश्चन समझा. यहाँ पर लेट करेंगे. लेट r सेंटीमीटर बी रेडियस r centimeter radius of cylinder and h centimeter be height of cylindrical shaped filled with ice cream. Filled with ice cream. Ice cream. Filled with ice cream container. And another the filled a cone given a cone which
h1 be height of cone and surmounted a hemisphere and surmounted a hemisphere ice cream on it which r1 be the radius which r1 be the radius of hemisphere. The radius of hemisphere तो हमारे को जो है नंबर ऑफ आइसक्रीम्स निकालनी है. सो नंबर ऑफ कोन्स आइसक्रीम n नंबर है. n नंबर ऑफ कोन्स आइसक्रीम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ फील्ड आइसक्रीम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कोन्स with hemisphere सो हमें n इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ फील्ड आइसक्रीम इन सिलेंडर. सो वॉल्यूम ऑफ फील्ड आइसक्रीम सिलेंडर. सो n इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस हेमिस्फीयर वॉल्यूम 2/3 पाई r1 क्यूब. So here pi is common. Pi r is given 6 into 6 और h is cylinder height is 15 oblique pi easily common both side. So pi is common, pi r square also common, pi r square is common. So r square 1 is common. So अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा 1/3 पाई एंड आर स्क्वायर चला गया तो h1 प्लस 2/3 पाई इज 1 आर स्क्वायर को r1. So here pi से pi goes here 6 into 6 into 15 r1 square. So we
write here the values which is filled it here in a cylinder radius 6, height is 15, cones R1 is diameter is 6, so radius is 3 centimeter. RH1 height of cones is 12. Hemisphere radius R1 is 3 centimeter. So we put here the values. R1 is 3 centimeter into 3, 1 by 3. H1, the height of cone is 12 and plus 2 by 3. R1 is 3. So here we solve it. N is equal to, here 1 by 3 is also common both, तो हम कर सकते हैं क्या, 6 into 6 into 15 3 into 3 oblique 3 is common. So अंदर हमारे पास 12 plus 2 3 is 6. So 3 1 ja 3, 3 1 ja 3. So 6 into 6 into 15 oblique 18 into में 3 is equal to n. So here we cancel the numbers. N number is 6 into 6 into 15 oblique 3 into 18. 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 2 1 ja 2, 2 9 ja 18 and 3 3 ja 9, 3 2 ja 6 and 3 1 ja 3, 3 5 ja 15, 5 2 ja 10. Here 2 into 5 is equal to 10. So there are 10 number, n is equal to 10, which 10 ice cream can be filled 10 ice cream can be filled by cylindrical ice cream box. Cylindrical ice cream box. Question number 6 देखेंगे. Here question number 6 is that how many question number 6, how many silver coins 1.75 centimeter diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid dimension is 5.5 centimeter into 10 centimeter into 3.5 centimeter.
हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स मेक इट। सो क्वेश्चन हमने समझा। क्वेश्चन हमारा सिल्वर कॉइन्स बनाने हैं जिसका डायमीटर इज़ 1.75 सेंटीमीटर है और उसकी जो थिकनेस है वो 2 mm रखनी है। मस्ट बी मेल्ट फ्रॉम क्यूबॉइड्स, वो क्यूबॉइड्स से हमें कॉइन्स बनाने हैं। क्यूबॉइड का डायमेंशन देगा 5.5 into 10 centimeter and 3.5 centimeter. So we make figure first. Cuboid shape is given as this is a cuboid. This is a cuboid which has L is 5.5, B is 10 centimeter and 5.5 centimeter and H is 3.5 centimeter. Is convert a cylindrical, make it coin which coin 2 mm thickness, 2 mm is thickness is 2 mm. Diameter is also given 1.75 centimeter. So we understand number of coins बनाने हमारे को, तो लिखेंगे हम number of coins, number of coins is equal to volume of cuboid oblique में number of one coins, number of volume of volume of one coins, volume of number one coins. So let करते हैं, let length be L centimeter and breadth be B centimeter and height be H centimeter respectively. Coin and coin radius be R1 and height be H1. So here number of coins is equal to L into B into H oblique में volume of one coin is pi R1 square H1. So here L is given 5.5 centimeters, B is also given 10 centimeter, H is also given 3.5 centimeters, oblique pi is 22/7 और diameter is given है radius 1.75 by 2 and
and thickness is 2 mm. 2 mm change into centimeter. 1 centimeter is equal to 10 mm. So 2 divided by 10 is equal to 0.2 centimeter. So 0.2 is centimeter. Here all are multiplied. These are all multiplied. So we write here this 5.5 into 10 into 3.5 oblique 1 oblique 22 oblique 7 1.75 by 2 1.75 by 2 and 0.2 by 1. So these multiply with under and this multiply upon. So we get the number 5.5 into 10 into 3.5 multiply 7 multiply 2 and upon में 22 1.75 into 0.2. So we change its point को हम हटाते हैं 5.5 oblique 10 oblique 1 3.5 oblique 10 7 by 1 2 by 1 and 2 by 1 नीचे 22 oblique 1 175 by 100 into 175 oblique 100 into में 2 by 10. So these number multiply these and these multiply these. So we get here 55 multiply 10 multiply 35 multiply 7 multiply 2 and 2 and multiply 100 into 10. This is a two part. We solve it. Oblique 22 175 into 2 into 10 into 10. So this is number of n. इससे नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे हमारे. सो हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इधर से 0 0 आउट 10 1 जा 10 10 1 जा 10 एंड 0 1 1 0 इज कैंसिल. 2 से कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 एंड अगेन 11 से 55 काटते हैं. 11 2 जा 22 11 5 जा 55 एंड 5 2 से 2 कैंसिल करते हैं. 2 1 जा 2 2 1 जा 2. हेयर 5 से 75 को कैंसिल करते हैं. 5 1 जा 5 5 3 जा 15 5 5 जा 25 5 से 10 और 25 काटते हैं. 5 2 जा 10
and 5 7 जा 35 and 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. So here 35 and 75, 5 7 जा 35 and 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25 and again 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 50, 7 5 जा 35 and 5 से काटते हैं, 5 से काटते हैं 10 को, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 into 100 400. There are 2 multiply 2 into 100. So 400 number of coins, number of coins 400. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. ए सिलेंड्रिकल बकेट है 22 सेंटीमीटर हाई and radius of base is 18 centimeter, is filled with sand. The bucket is emptied on the ground. A conical heap is 24 centimeter. And the radius of find the radius and silent height of the heap. The conical heap, the ground and conical heap height is 24 centimeter. So make it करते हैं फिगर. एक सिलेंड्रिकल बकेट है हमारे पास. This is bucket, cylindrical bucket, 22 meter high, 22 centimeter high, is filled high and radius of base is 18, r is 18 centimeter. Bucket is emptied ground and conical shape. एक conical बनाते हैं हम shape, which conical shape heap emptied and ground and conical heap 24 centimeter. The height bucket and the ground and conical heap is 24 centimeter high. centimeter height. Find the radius and silent height. Okay, so here let करेंगे, let h centimeter be height of cylinder and radius be r centimeter and conical shape which radius r, which be r1 is the radius, r1 is the radius and L silent height of cone, silent height of the cone. So we now the volume of cylinder is equal to volume of cone. So here
वॉल्यूम सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम कॉन इज 1/3 पाई r1 square h1. So here pi, both having pi, cancel out. Pi r is 18 into 18, h is 32. Here 1/3 pi r1 is फाइंड आउट करना है और h1 is given 24. So here pi goes 18 into 18, 32. Here 24 is down, cross multiply r1 square. So here we 24 in 32, 4 8 is 32, 4 6 is 24, and again 2 3 is 6, and 2 4 is 8, 3 6 is 18, 3 1 is 3, 3 6 is 18. So 6 into 18 into 4, यहाँ r1 square. So LCM is taken here, 2 into 3, 2 2 is 18 का LCM ले लेंगे, 3 3 is 9, 9 2 is 18, 3 into 3 into 2, 4 is 2 into 2, r1 square. So r is 18 18 32 and 3 24, 3 क्रॉस में भेज दिया, इंटू में 3, इंटू में 3, so इंटू में 3, we find here r square, 3 cross multiply, so our answer is r1 is 3 into 3 into 3 into 3 and 2 into 2 into 2 into 2 pairs is that. So 3 into 3, 2 into 2, r1 is 2 to 4, 4 3 is 4 3 is 12, 12 3 is 36. So r1 is equal to 36 centimeter, 36 centimeter r1. So here salient height is also find out. Salient height, there L square plus is equal to R square plus H square. Here H is 24 square, R is 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर हो गया हमारा 1296 प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576
is equal to L square. So adding here 1872 is equal to L. So we take here LCM. LCM is that 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13. So this pairs 2 into 2 into 3 into में root 13, 2 does 4, 4 is 36, 36 root में 13. This is L, silent height. Here silent height 36 root 13 and R1 is the radius, is 36 centimeter. We find both. So we easily find out this question easily, very easily method. Boys, make its practice and solve it. Thank you.